आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 8 समर मेकअप ट्रेंड्स एंड आइडियाज टू ट्राई इन 2022। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। दिस पार्ट 2 फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब? मैं मीनल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो द फिफ्थ मेकअप लुक विच इज सुपर ट्रेंडिंग फॉर समर्स इज कोरल रेड लिप। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमने फ्लफी ब्राउ का मेकअप लुक में शेयर कर चुकी हूँ पार्ट 1 में। द लिंक वुड पॉप ऑन द स्क्रीन। वहाँ से आगे यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग लाइनर। पहले आपको नॉर्मल आई लाइनर लगाना है, देन आई एम गोइंग अहेड विद ब्रॉन्जर एंड आई एम गोना पुट दैट ब्रॉन्जर ऑन इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज टू गेट दैट पॉप, बिकॉज समर्स में शिमर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है व्हेन द सनलाइट कम्स ऑन योर फेस, पूरा शाइनी रिफ्लेक्ट करता है, बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम द फेस शॉप। नाउ आईब्रोज में ऑलरेडी मैं आईब्रो वैक्स लगा चुकी हूँ, उसके ऊपर से बहुत अच्छे से आईब्रो पेंसिल लगा के फिल कर रही हूँ। Then with the help of a spoolie I have to blend everything because eyebrow पे already eyebrow wax है, so I have to blend all the color. I'm also in love with the fluffy eyebrow trend जो मैंने पार्ट 1 में शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज डू। Now for the highlight of this look I'm using this very beautiful coral lipstick. This one is from a brand called Avon. The shade is called Coral itself. कोरल कलर समर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यूजुअली ट्रेंडिंग में होता ही है ना, बिकॉज इंडियन स्किन टोन पे कोरल हर किसी को सूट नहीं करेगा। सो व्हाट वी डू इज़ वी अप्लाई रेड विद इट, लाइक वी मिक्स अ बिट ऑफ रेड विद द कोरल। यहाँ पे मैंने L18 का लिक्विड रेड कलर यूज़ करा है and I'm just gonna blend it very nicely with the help of my fingers, and this is it. Our look is complete. Moving on to the next makeup look, it is colored eyeliner which I am a fan of. It is gonna be very very simple to the same look जो हम लोग कर चुके हैं, इसी पे हमको बस colored eyeliner लगाना है। Now I love to use liquid color eyeliner. यहाँ पे मैं लैक्मे का liquid color eyeliner यूज कर रही हूँ which is in blue color. I have pencil color eyeliners also, but they don't work that well. But these liquid ones are amazing. एक ही प्रॉब्लम होती है कि eyelash पे भी लग जाता है, so that's the only problem. Moving on, because हम लोग colored eyeliner लगा रहे हैं तो lip has to be like very natural. Glossy lips are again trending in summer 2022, so I'm going to do the same with this colored eyeliner. The liquid lip gloss that I'm using is a lip plumper by Essence. It is not a great lip plumper, but it's a good gloss. If you ask me, this is my favorite look from all the 8 looks. It is something which I can actually wear and step outside of my house. I would love to do it. I usually do wear a lot of blue eyeliner. I love how it complements Indian skin tone. So that completes our liquid colored liner look. And moving on to the next one is this floating eyeliner. It is very much trending. All you have to do is you have to apply normal liner and then you have to start winging the liner, and once you have winged the liner, all you have to do is like make an inverted eye shape, like an almond shape. It doesn't have to go like all the way, but it has to stop midway. Eventually आप practice करोगे तो एक go में हो जाएगा. It is also very important to apply some highlighter on the inner corner of your eyes. यहाँ पे मैंने blue eyeliner भी लगाया है. You can like change it for black one. It's a very bold look. If you personally ask me, I might not be able to carry it as well, but if you can, well and good. Brings us to the last trending makeup. Makeup जो मैंने अभी करा है इसका tutorial already मैं part 1 में post कर चुकी हूँ. All that I'm going to be doing here is adding some rhinestones और बिंदी as you call it. जब हम स्कूल में थे तब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, सब लोग अपनी आईज पे लगाते थे. Now it's again back in trend. Usually every year कोचेला के टाइम पे ये ट्रेंड वापस आता ही है, and अभी कोचेला हुआ था तो the trend is back. So with that all the 8 looks are completed. I hope you have liked it. If you have, please like and subscribe. I'll see you in my next video. Till then, be you, be beautiful.